ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने आई थिंक एक्सप्लेन किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग और इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स. सो let's continue with that. Let us write few problems. So we have solved 2 3 problems from last class. So let's continue that. 2 questions we have solved, we have seen. So chalo मैं third से start करता हूँ. So 2 questions we have discussed in last class based on that. So today we'll continue with the question. And किसी को कुछ बोलना हो, so you can directly unmute and tell, because वो chat I could not see क्योंकि full screen mode में है, so मैं ये नहीं देख पाऊंगा chat किसने क्या किया. So I will see later on. Okay, so write the question. So the question is, अब थोड़ा सा एडजस्ट करो ये बैकग्राउंड ऑडियो का, क्योंकि शादी का सीजन है गांव में, ऐसे ही चल रहा है. Okay, so write the question. Question is, let E and F be two independent events. Okay. Let E and F be two independent event. Okay. So let E and F be two independent event. The probability that both E and F happens is 1/12. The probability that both A and B happens is 1/12. Okay, so probability of happening of both A and B is given you 1/12. So question they are asking you, okay, one more thing is given, and probability of neither E nor F happens, and probability that neither E nor F happens is 1/2. Okay, so then they are asking you, so you have the four options, probability of EF. Okay, so they want to ask, then what is probability of E and what is probability of F? Okay, so what is the probability of E and what is the probability of F? What is the occurrence of probability of E and what is the uh, probability of occurrence of F? So you try it and you tell me the answer, then I will solve. You have the options also, I can give you the option, but option will make it much easier. So options are actually, A option is probability of occurrence of E is 1/3, 1/4. So this is 1/3. Probability of occurrence of F is 1/4. B option is probability of occurrence of E is 1/2 and 1/6. 1/2. Probability of F is 1/6. C option is 1/6, 1/2. Probability of E is 1/6. Probability of F is 1/2. And D, none of these.
क्वेश्चन इज क्लियर? E and F are independent and the probability of occurrence of both A and B is 1 by 12. Probability of occurrence of neither E nor F is 1 by 2. Then what is the occurrence of probability of occurrence of E and F separately? Okay, so in chat, two of you answered option C. So why C? तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो या गाने के मजे ले रहे हो, ये बताओ। सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा तुम लोग? ओके, सो कुछ लोग का ऑप्शन डी भी आ रहा है, कुछ लोग का बी भी है, कुछ लोग का ए भी है। वेरी गुड। सो बचा क्या भाई? ए बी सी डी। चलो, कोई ना कोई सही तो होगा ही, है ना? सॉल्व करूं मैं? चलो मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या है, ई एन एफ बी टू इवेंट प्रोबेबिलिटी देखो। occurrence of E and F, both probability is 1 by 2, and probability of neither E nor F. Okay, so neither E means E complement and nor F complement, that is 1 by, तो ये 1/12 है, ये 1/2 है, एक बार चेक कर लेना। सो ये 1/12 है और ये 1/2 है, नाइदर ई नॉर एफ। ठीक है। अब देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है ना, कि यू कैन सेपरेट द इंटरसेक्शन, राइट? तो इसको तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/12, और यहाँ तुम ब्रेक कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश 1/2। ठीक है ना? तो इसको तुम, ये तो ठीक है, पीई इंटू पी एफ इज इक्वल टू 1/12। अब इसको तुम लिख सकते हो, बताओ मुझे कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के टर्म में? minus probability of E. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना? इस तरह से। तो चलो अभी अपनी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को एक्स बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को वाई। तो एक्स इंटू वाई 1/12 हो गया,
एंड 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई तुम्हारा 1/2 है. अब यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स. सो कैन यू नॉट सॉल्व दिस? यू कैन सॉल्व नाउ. आई थिंक इट्स इजी नाउ. सो चलो इसको इस वाले इक्वेशन को तुम पहले सिंप्लीफाई कर लो. तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है. सो एक तो ये इक्वेशन है, इसको भी ऐसे ही रखो सिंप्लीफाइड फॉर्म. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 1 इंटू 1 होगा. 1 इंटू माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होगा. माइनस वाई होगा. माइनस माइनस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2. अब एक्स वाई की वैल्यू 1/12 है. चलो पुट कर दो. तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1/12 की वैल्यू 1/2 है. तो ऐसा करो, अब एक्स प्लस वाई निकाल लो. तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स माइनस वाई को राइट में भेज दिया. तो जब राइट में भेजोगे तो आएगा 1 प्लस 1/12 इधर ही रहेगा, हाफ को इधर बुला लो. तो अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो. चाहो तो 12 एलसीएम ले लो. तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 1 माइनस 6. तो 13 माइनस 6 7/12. अब देखो ऐसा है कि x प्लस वाई जो है 7/12 है, ठीक है. एंड पहले से हमें पता है, एक तो ये अभी आया दूसरा इक्वेशन से, और फर्स्ट इक्वेशन से पता है हमें कि x इंटू वाई 1/12 है. तो अब तुम खुद भी डिसाइड कर सकते हो ऐसा कौन से दो नंबर हैं जिसको ऐड करने पे 7/12 आएगा और मल्टीप्लाई करने 1/12 आएगा. तो यहाँ से मुश्किल नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है. तुम्हें पता है कि 12 के फैक्टर 3 4 12 होता है. और एक बार बस ये चेक कर लो, क्या 1/3 प्लस 1/12 सॉरी 1/3 प्लस 1/4 1/12 होगा. 1/3 प्लस 1/4 7/12 होगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि x प्लस वाई 7/12 है ना. x इंटू वाई 1/12 था, तो मतलब हमने 12 को लिखा 1/3 इंटू 1/4. दैट इज फाइन. So now we have to check whether this number satisfy. Can I say x is 1/3, y is 1/4? Is it true? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? चेक करके बताओ. Yes, sir. हाँ, क्योंकि दोनों को ऐड करो यही आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करो ये. सो दिस टू नंबर सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. सो ऑब्वियसली ऐसा होगा. या अदर वे यू कैन से ओके आई डोंट वांट टू टेक दिस, सो यू कैन इंटरचेंज द वैल्यू. नथिंग विल make difficult. Okay, so x is equal to 1/4 and y is equal to 1/3. Either you write this solution or you write this solution, there is no problem. So let's look at the options. So x I named probability of e and y probability of f. So you check the option. So probability of e is 1/3, f is 1/4 and rest are all different. So only a is only correct option. ठीक है, तो ध्यान से करो भाई. तुम लोग जल्दीबाजी में सी लगा दिए है ना. प्रोडक्ट सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा था ये वाला, है ना. बाकी दूसरे को भी करना पड़ेगा चेक. तो मुश्किल नहीं था. और ये जेई एडवांस का आया हुआ है, बहुत पहले का है लेकिन, है ना. ये लगभग 10 15 साल पहले का क्वेश्चन है. तो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, मतलब सिंपल. ई इंटरसेक्शन एफ ये हमारा एक इक्वेशन था. दूसरा ये गिवन है. अब इंडिपेंडेंट है तो हमने प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया. प्रोडक्ट में ब्रेक किया तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला लगा लिए. अब हमने पीई पीएफ में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने चलो अपने कंफर्टेबल होने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह एक्स ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को वाई ले लिया. तो यहाँ मिला एक्स इंटू वाई 1/12, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई 1/2 है. दोनों को सिंप्लीफाई करो. अब टू इक्वेशंस हैं, टू अननोन्स हैं. तो फाइनली ये दो इक्वेशंस आ गए. अब हमने देखा ओके 1/3 इंटू 1/12 सिर्फ 1/2 होता, मतलब 2/6 भी हो सकता था. बट फिर वो भी चेक कर सकते. तो क्या 1/2 प्लस 1/6 7/12 आएगा? नहीं आएगा, चेक करना. तो आई थिंक यही नंबर आएगा, है ना. सो यू कैन गेस डायरेक्टली. अदर वे इज तुम ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है तो तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे. फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालो 7/12 माइनस एक्स, दूसरे में पुट करो, देन यू कैन सॉल्व साइमल्टेनियसली. सो बट आंसर इज दिस. सो इसमें किसी को डाउट है अभी जो हमने किया है? दैट इज करेक्ट. Yes. ओके चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मतलब इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब जब पूछा गया एडवांस में तब उसमें, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था. अभी तुम्हारे लिए इजी हो सकता है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट मी राइट द फोर्थ नंबर. So the next question to you is, if A and B are two events such that, so if A and B are two event such that, if A and B are two events such that probability of A union B is equal to A intersection B, then
then the true relation is so first option है PA plus PB is 0. Second option है PA plus PB is probability of A plus probability of B. This is probability of A into probability of B given A. Probability of A into probability of B given A. अपॉन में लिखा होगा मतलब वही होगा. सी ऑप्शन है PA plus PB. ठीक है, PA plus PB is 2 times probability of A into probability of B given A. Okay, and D option is none of this. करो. सुनाई दे रहा गाना. स्लो क्वेश्चन सॉल्व करो है ना, सब गाने के वजह मतलब. ओके, फिर से सबका सी ऑप्शन आ रहा है. ओके, तो सबको सी ऑप्शन ही आ रहा है. ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं. हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है. ओके, तो बताओ जी, कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ.
Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. यस, सो इसको यूज कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को हम राइट साइड में ले आते हैं। तो यहाँ से मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक ठीक है। अब हमसे तो यहाँ कुछ और बोल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब हमें क्या देखना है कि चलो ए वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा तो आया नहीं जीरो। ओके, और जीरो का कोई चांस भी नहीं दिख रहा है। अब मुझे इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ऑब्वियसली इंट्यूशन देखोगे तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, ओके सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ टू है और हमारे में भी टू आ रहा है। बट कैसे ब्रेक करेंगे? ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ऐसा कैसे बनेगा? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स्ट्रा है ना, यहाँ भी मतलब हमारे पास वो नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो हम जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर रहे हैं कि ओके वैसा बना सकते हैं क्या। तो मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताओ? Probability of B given A. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी में 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ओके, सो ये आया। तो मतलब ये सी ऑप्शन सब लोगों ने सही आंसर बताया है। चैट में जो लोग बता रहे थे, सॉरी, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, सो एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, डी वाज इनकरेक्ट। सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन जेई एडवांस, बट अगेन लॉन्ग लॉन्ग बैक है ना, 20 साल पहले ऑलमोस्ट, ज्यादा ही हो गया। सो दिस अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, these are standard questions. Okay, next question. Okay, so next question देखते हैं। If A and B are two events such that if A and B are two events such that probability of A is non-zero and probability of B is not 1, then probability of A complement given B complement is equal to what? Okay, again, you have four options. So A, B are two events such that probability of A is non-zero, probability of B is not 1. Then what is the probability of A complement given B complement? So is it 1 minus probability of A given B, or B option is it 1 minus probability of A complement given B? So ध्यान से देखना ऑप्शंस को, क्योंकि बस कॉम्प्लीमेंट का फर्क दिखेगा। C option is 1 minus probability of A union B upon probability of B, ठीक है। डी ऑप्शन है probability of A complement upon probability of B complement। हम्म, बताओ।
आंसर आया भाई? ओके, फिर से सभी लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, तो 1 2 3। ओके, श्रुति का आंसर बी है। ओके, और आ रहे उसका बी है, हैं? बाकी सभी लोगों का सी है। ओके, तो वी हैव टू सी ना कि क्या करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जैसे बी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ डी ऑप्शन के डिनोमिनेटर में है, तो वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर। ऑप्शन सही लिखा ना मैंने? अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने ऑप्शन एक में गलत लिख दिया। डी करेक्ट है, बी में मैंने कॉम्प्लीमेंट छोड़ दिया, सी में सॉरी, क्योंकि जिन लोगों ने आंसर दिया है तुमने बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और बाकी में नहीं है। ओके, सो तो ये मेरी मिस्टेक थी लिखने की। तो यहाँ से अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 माइनस, चलो 1 माइनस मत करो, सीधा लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तुम ए भी मान लो, ए गिवन बी का जो फॉर्मूला होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ लगा लो, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डैश लगा लो, ऐसे नहीं लगाना तो मतलब ऐसे डैश लगा लो, या तुम चाहो तो इसको पूरे पे ऐसे बार लगा सकते हो, सेम थिंग, ठीक है, वही बात है। और अपॉन डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, सो ए बी में तो नहीं है डिनोमिनेटर में बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम सी डी के बारे में सोच सकते हैं। दोनों में डिनोमिनेटर में बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए यू पुट 1 माइनस, सो यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सी करेक्ट है। बाकी जो लोग सी तक नहीं पहुंचे, हो सकता है ना उन्होंने ध्यान दिया हो कि बी कॉम्प्लीमेंट छूट गया था। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? हम्म। ठीक है, तो अभी एक दो और क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 क्वेश्चन इज, ट्राई करो इसको भी। ये तो इजी, आई थिंक ये हो सकता है तुमने पहले भी किया होगा। अ कॉइन इज टॉस 3 times इन सक्सेशन, सो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times in succession. Okay, a coin is tossed 3 times in succession. If E is the event, if E is the event that
So E is the event that there are at least two heads. There are at least two heads. ठीक है, meaning of E is there are at least two heads. And F is the event in which F is the event in which, okay, first throw is a head. Yeah, first throw is a head. First throw his head. Okay, so you have tossed thrice, so first time you get head. So then find probability of E given F. So this is easy question, you all can do easily. In fact, you all are doing well. So options are 3 by 4, 3 by 8, 1 by 2, 1 by 8. Okay, so E is there are at least two heads. F is first throw is head. Okay, so one of you answered C. Okay, yeah, what about others? Yes, C, B. Okay, so easy, है ना? Coin is tossed 3 times in succession. So you can write the sample space also. E is the event that there are at least two heads. So at least two heads. Okay. So one way is to we can write sample space, then we can do other way without sample space we can also try. So let me do by sample space. So sample space is so 3 time tossing, you know what are the possible outcomes? HHH, HST, HTH, HTT, THH,
THT, TTH, TTT. This is sample space. And E, they said you getting at least two heads, at least two heads. Okay, so at least two heads, this, and this one also. Any more? No, this four, right? So at least two heads means it will contain at least two heads. कम से कम दो heads होनी चाहिए. F event जो है first throw is head. So you have to write only those outcomes which has first throw head, like this, this, first head. ये चार आया इसमें. So HHH, HHT, HTH, and HTT, like this. So they asked you probability of E given F. So chalo, you will need E intersection F. So tell me, what is E intersection F set? How many elements are common? बताओ भाई. E और F में क्या क्या कॉमन है? Four. All. No, all are not common. Three are common. Yes, three elements are common. First three are you can find they are same. Okay, so intersection if you write, so you will get HHH, HHT, HTH. So probability of E given F. So you know you can write directly number of element in E intersection F upon number of element in F, or you can write probability separate, no problem. So intersection has three element and total F has four element. Directly you can write this. So 3 by 4 A option. Don't know what is the answer here. Yes, 3 by 4 is the answer. So how you all decide? Only one answered. No one answered A option. This is bad. So this is the one way. Okay, other way was you can try another way directly. So this is easier, right? For three coin cases, you can write sample space. When like you toss 10 times, 15 times sample, writing sample space is a difficult task. They can do in other way. Okay, that's fine. Okay, try one more question. So two cards are drawn one by one from a pack of cards. Two cards are drawn. Okay, two cards are drawn one by one from a pack of cards. Okay, from a pack of cards. The probability of getting first card. The probability of getting first card and ace. Okay, the probability of getting first card and ace, and second and honor card. So what is the honor card? Do you know? So two cards are drawn one by one from a pack of cards. The probability of getting first card and ace and
Okay. Second card is, let's say, simple. Let's say king is what? Try this. Okay. Okay, so you might be thinking of with replacement or without replacement. Hmm. Two cards are drawn one by one from the pack, one by one. So you have to know whether with or without. So let me call it without replacement. So this type of question we did in last class also, with replacement, without replacement. Okay, so tell me answer quickly. Hmm. So asking for both the events, so you will just multiply. Okay, so yeah, so you are answering correct in the chat. So its answer is correct. So simple intersection of two event. Just I'm asking. Okay, so you all are correct. So simple is two cards are done without replacement. So this question we did in last class actually. Probability of A intersection B. So A is getting first card and ace. So ace are 4 out of 52. And because of without replacement, the total number of card now you have 51 only. And the king in that 51, there are 4 king. This is the answer. Okay, so you can also cancel it. So 1 by 13 into 4 by 51. You can multiply it. So this will be the answer. And I use the concept here, A intersection B. Actually, you can think what I use. So I used multiplication rule of counting. So we did this in last class. Probability of A intersection B is probability of A into probability of B given A. Okay. Okay, that's fine. So do you want to write one more question? Chalo, one more question. That will be last. So we'll continue the topic. Then next topic. So in mathematics, actually at the JE level or intermediate level, you solve as much as problem as you can. Then your concept will be much good. So eighth question. So the question is, uh, let small p denote the probability that
let small p denote the probability that, okay, the small p denote the probability that a man aged X year will die in a year. Let small p denote the probability that a man aged X. So X is the age of a man. Aged X will die in a year. Okay. The probability that out of n men, the probability that out of n men, okay, A1, A2, and up to AN, okay, each is X, each is X, okay, A1 will die. So the question, A1 will die in a year, in a year, and will be the first to die, will be the first to die, okay. So read the question again if you're not getting. So what is the probability actually? So what is the probability of that? Okay, so you have the options because option must be needed here. So A option is 1 minus P. So it's a 1 by N, 1 minus P raised to power N. B option is 1 minus P raised to power N only. And the C option is 1 by N minus 1, 1 minus P raised to power N. Okay, D option is none of this. Okay, so try this question. So small p is the probability that a man aged X, a man whose age is X, will die in a year. The probability that out of n men, there are n men, so A1, A2, AN, each is X. There are n person, like A1 is first person, A2 second, AN is nth person, nth man. Each have age X. So A1 will die in a year and will be the first to die. So what is the chance? Right?
Are you getting answer? Okay, everyone is answering. P is not a probability that the man aged will die in a year. So one person, any one person will die in a year. This. Okay. So will not die. What is the probability of not dying? It's a 1 minus P. Okay. So complement. So probability of dying, one person is small p. So will not die is 1 minus p. And none of the person will die. The probability will be 1 minus p, 1 minus p, 1 minus p. You will multiply. And the first will not die and second will not die like this. So it will be 1 minus p raised to power n. None of them will die. Okay. But they're asking you the probability that out of n man, each age x, A1 will die in a year. The first event is A1 will die in a year. So what is the chance that A1 will die in a year and will be the first to die? So will be the first. Okay. So A1 will die before A2 and all this. Okay. So maybe after A, others may die. So the probability they are asking you, at least one of the person will die and A1 will be the first person. So what is the probability of A1 will die and he is the first one? Okay. So first, what is the probability that A1 will die? Okay. So there are n persons. So if you think like any one of the person can die in a year. So what is the chance that A1 will die? There are n possibilities, like there are n persons. Okay. And out of n, A1 will die, the probability will be, you are selecting one out of n. Okay. A2 may die, A3 may die, any one of the n main can die. But what is the chance that A1 will die? So that is 1 out of n. Okay. And dying in a year probability is P. So how will you approach? Because you have to first think, okay, what is 1 minus P? So P is the probability that a man will die in a year. That is P. So 1 minus P is the probability that man will not die in a year. Okay. And power n, how power n will come? In all the options, power n is there. So you can think, okay, so the probability that none of them will die, none of them this. And 1 minus is there. So complement. So what is complement of none of them? So at least one of them. The probability that at least one of them will die is 1 minus p raised to power. What I'm telling, just try to recall it, understand it. So probability we know the probability that the man will die in a year. A man will die in a year. Okay. That is small p. Okay. Okay. So probability that anyone, okay, randomly, a man will not die in a year. Okay. So that is 1 minus p. So let me define event. Suppose E I defined at least one. Okay. See, the question is, the question they asked you, the probability that out of n main, each is x, A1 will die in a year, then what is the probability and will be the first to die. So more people can die. Okay. That's why I'm defining E as at least one main can die. So this E I defined. F is A1 is first to die. So we have to find the probability that what is the probability that A1 will die in a year
and will be first to die. So means more people can die. Okay, so they are asking you to find the probability of E intersection F. Means at least one of the person can die, but A1 is the first one. So you can write it like, or you can write F intersection E, no problem. So you can also write it probability of F intersection E. And you can think, okay, probability of F, first you write, I'm using multiplication rule of probability of F into probability of E given F. So what is probability of F? A1 is first to die. Okay, first to die. So there are n persons. Okay, so you are selecting one person, like from out of n card you are drawing one card. Okay, and getting A1. So there are n person, you are selecting one person at random. So what is chance that one person, the first person you are selecting, is A1? So how many A1 are there? 1 out of how many? N. So that will, you will get 1 by n. And now what is probability of E given F? Okay, so E given F, or you can say E was, okay, or you can decide in other way. If I write probability of E first, or you can write in other way. Okay, so in other way, like I was writing earlier, so in that way you have to think over this question. Okay, so probability of E into probability of F given E. The meaning of E was at least one main can die, and probability of F given E means what is the probability that A1 is first to die given that at least one of the person can die. So again, one, at least one will die, either one will die, second, third, anyone will die. So this probability will be 1 by n. Okay, I'm writing like this. And what is probability of E? So probability of E we have to calculate. So how probability of F given E is 1 by n? So F given E, what is probability that A1 will die, first to die, given that at least one will die? Okay, so you are given that at least one will die. Okay, so what is chance A1 will first to die? So again the same, there are n person, you are selecting first person, the first person to die. So what is chance that will be A1? So they are 1 out of n. And probability of E at least 1. So let me find probability of E separately. So probability of E, if I write, so probability of E is at least one person or main will die. So directly is a difficult task. So you will take the complement. 1 minus complement of this. So can anyone tell me what is the complement of this? At least one will die. Complement. No. At least one means the meaning of at least is itself more than one or more than one. I'm writing complement. Complement is just opposite. At least one main will die. So that is either one or more than one person will die. Main will die. What is complement? No main will die. That is the complement. Okay, at least one, either one main will die, or two, or three, or four, or all n can die. But I'm asking complement. So complement, this is like, this is probability of E. So I wanted to write as 1 minus probability of E complement. Okay, I'm going to write like this. So 1 minus probability of no man will die. So neither A1 will die, nor A2 will die, nor A3. So probability, you can write A1 complement intersection A2 complement intersection A3 complement, or the no one will die, AN complement, like this. So no one will die, 1 minus, and all persons are different. Okay, so you can break this intersection into product. A1 complement product, probability of A2 complement, and so on, probability of AN complement. So 1 minus probability of A1 complement. The probability that A1 will die is small p. So A1 will not die. What is the probability? 1 minus p. So 1 minus p, 1 minus p, this will go n time. Okay, this is probability of E separately we counted. And now so you can put here, so probability of E, if you put here 1 minus p raised to power n, and into
A1 will be first to die is 1 by n. So this is the answer. So this will give you the A option. Okay, this is all about the entrance question. So you try it. So in the next class, we'll start with the next topic is total probability and Bayes theorem. So that is also a good topic. So in the next class, we'll start with the theorem of total probability, theorem of total probability, and related is Bayes theorem. They are not separated. They are based on same theory, Bayes theorem, and then we can start random variable. And in that random variable, you will also know binomial distribution. Binomial distribution. So their probability will finish up to JEE syllabus. These 4 topics are left: with total probability, Bayes theorem, random variable, then binomial distribution. Okay. So any question anyone have? Okay. So if you don't have question, then we can stop. So any one of you, do you like anyone singing? So do you like to sing? Anyone? हमारे देखो माहौल बना, दिन भर गाने चल रहे होते हैं. किसी को अच्छा लगता है? किसी को नहीं? ओके. नो. अरे भैया कुछ तो हॉबी होनी चाहिए. किसी की हॉबी सिंगिंग नहीं है. ओके. So Ayush is saying yes. So would you like to sing, Ayush? Anything, 1 or 2 line you can try. Okay. So you like to listen है, not to sing. अरे तो गुनगुना लिया करो. चलो ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना. और कुछ डाउट होगा तो you can ask in next class. And you practice it also, okay? So whatever book you are following, just go through it. Okay. Okay, then that's all for today. Thank you and bye bye. Take care.